A very good morning to everyone on this live session on momentum trading. A very good morning. We will just start in a couple of minutes. Thank you. Before that, I would just want you to write in the chat that you are able to view the screen and you are able to hear my voice clearly. Definitely. Komal will be speaking. I'll be speaking in Hindi as well. Momentum trading क्या है, कैसे use करते हैं? So I will be talking about that. Don't worry. Be rest assured, be it English or Hindi, you'll be getting a very good idea, understanding, and how to how to use momentum trading, how to understand momentum trading, what exactly is momentum trading all about. So we'll just start in a minute. Yeah, I'll be covering both, so don't worry. So let us then start because all of you, many of you are there exactly on time. So I'm also there. So let's start on this. Today what I'll do, I'll talk something about momentum trading. Ki momentum trading exactly hota kya? What exactly is momentum trading? And also I'll give you real life examples like in the markets, what is happening right now. We'll take up some stocks of your interest. We'll look at them. We'll also look at Nifty, Bank Nifty, and see how the momentum is गोइंग तो मैं जो है मोमेंटम ट्रेडिंग पे बात करूंगा लाइव एग्जांपल्स के साथ अभी मार्केट ओपन है तो हम लोग स्टॉक्स और कमोडिटीज में भी यदि किसी का इंटरेस्ट रहा करेंसीज में भी तो हम लोग उस पर बात करेंगे तो लेट्स एंड स्टार्ट ऑन दिस कि व्हाट एग्जैक्टली इज मोमेंटम ट्रेडिंग इसको कैसे समझते हैं कैसे देखते हैं सो वी विल लुक एट दैट सो माई सेल्फ अमरदेव सिंह फ्रॉम एंजल ब्रोकिंग सो वंस वी लुक एट मोमेंटम ट्रेडिंग यदि मोमेंटम ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो मोमेंटम ट्रेडिंग में वी विल बी कवरिंग बेसिकली आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो एंड ट्रेड सक्सेसफुली इन मोमेंटम ट्रेडिंग तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है किन बातों का ध्यान रखना है कैसे यूज़ करना है इंडिकेटर्स को कैसे एनालाइज करना है उस पर हम लोग बात करेंगे और आई विल एक्सप्लेन दैट विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स लाइक आई वुड से रियल टाइम एग्जांपल्स बिकॉज द मार्केट इज ओपन एज ऑफ टुडे एंड इट्स आल्सो expiry day. So we'll look at that. So the most important thing which you need to understand is that momentum trading, it's all about buying strength and selling weakness. Meaning what that if some what happens is that generally people are afraid to buy a stock. If a stock is going, say for example, we'll look at Infosys, we'll look at TCS, we'll look at a lesser known name like Borosil. So we look at different stocks, and I'll give examples. Also, I will take some stocks of your interest. तो मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि उसमें आप स्ट्रेंथ को बाय करते हैं मतलब जो स्ट्रांग हो रहा है उस पे यू आर टेकिंग अ पोजीशन मींस समथिंग व्हिच इज मूविंग यू गेट इनटू दैट so it's like a moving train so you're getting into a train and then it is picking up speed so you are buying strength and selling weakness what it means is ki those who go short like you are going short in the market for that derivative instruments basically the FNO stocks or it could be the Nifty Bank Nifty तो इसमें क्या है कि जो बाइंग स्ट्रेंथ है ना मैं हिंदी में जरूर हिंदी में भी मैं कवर करूंगा डोंट वरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है हिंदी इंग्लिश आई विल बी कवरिंग बोथ बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि यहाँ विल बी आई बी रिक्वायरिंग बोथ तो इसमें क्या है कि जो स्ट्रेंथ है ना स्ट्रेंथ मतलब जो स्टॉक स्ट्रांग चल रहा है जिसका अप ट्रेंड चल रहा है स्ट्रांग है उसमें आप बाइंग कर रहे हैं और जो वीकनेस है जिसमें वीकनेस है मतलब जिसमें आप लगातार सेलिंग देख रहे हैं उसको आप बाय नहीं करके उसको आप शॉर्ट कर रहे हैं so momentum is all going with the flow. It is all going with the trend. It is all trying to ride the trend. It is all trying to be with the strong camp. जो बुल कैंप है बेयर कैंप है उसमें उस पे आप आइडेंटिफाई करके कैसे करते हैं तो मोमेंटम ट्रेडिंग इज आल्सो अबाउट बाइंग हाई एंड सेलिंग लो ये थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ी इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा कि बाय हाई एंड सेल लो व्हाट आई मीन इज सपोज दैट अ स्टॉक इज एट 200 इट गोस टू 250 सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट you'll say आपको लगेगा कि 250 बहुत एक्सपेंसिव है बट मे बी द स्टॉक इज पॉइज्ड टू गो टू 500
सो यू शुड लुक एट बाइंग स्ट्रेंथ। जो स्टॉक में स्ट्रेंथ है, जो स्टॉक एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, उसमें आप बाइंग करते हैं तो यू कैन, तो वी लुक एट एग्जांपल्स आल्सो एंड आई विल एक्सप्लेन दैट। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो समझाना चाहता हूँ। सिमिलरली सेल लो, दैट मीन्स इफ अ स्टॉक इज एट 500, इट्स कमिंग टू 450, इट्स कमिंग टू 400, दैट मीन्स देयर इज सेलिंग प्रेशर इन द स्टॉक एंड द स्टॉक कैन करेक्ट फर्दर। तो जो दोज हु शॉर्ट और दोज हु ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड, जैसे जो एफएनओ स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो मोमेंटम जो है, व्हाट एग्जैक्टली इज मोमेंटम? मोमेंटम, व्हाट डू यू, इफ आई डिफाइन इन वन सेंटेंस, तो एग्जैक्टली मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस मूवमेंट ओवर अ पीरियड। मतलब जो प्राइस में जो मूवमेंट, प्राइस एक स्पेसिफिक डिफाइंड पीरियड रहेगा, इट कैन बी 5 डेज, इट कैन बी 10 डेज, इट कैन बी 12 14 डेज, वट। तो उस पीरियड को हम लोग कांस्टेंट रख के फिर ये देखते हैं कि प्राइस कैसे चेंज हो रहा है। वो दैट पीरियड की प्राइस का जो मोमेंटम है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, वो हम लोग देखते हैं। तो मोमेंटम बेसिकली रेट ऑफ चेंज, मतलब जो प्राइस चेंज हो रहा है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको वो कैप्चर करता है। सो इट टेल्स यू कि हाँ, अभी मोमेंटम बढ़ रहा है, मतलब तेजी और फास्ट, मतलब जो स्टॉक प्राइस और फास्ट ऊपर जा रहा है और फास्ट नीचे जा रहा है, तो मोमेंटम से आपको पता चलता है। तो देर आर वेरियस इंडिकेटर्स विच कैन टेल यू अबाउट मोमेंटम, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इट वर्क्स अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। तो हम लोग ये भी देखेंगे अक्रॉस टाइम फ्रेम्स की, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में हाउ मोमेंटम वर्क्स, हाउ दीज इंडिकेटर्स वर्क। सो वी लुक एट दैट एज वेल। The other important part of momentum और very significant part जो है ना, कि momentum indicators, they can warn of hidden strength और hidden और weakness ahead of the final turning point। मतलब मार्केट में मंदी आने से पहले आपको ये बता सकता है कि मार्केट में मंदी आ सकती है या सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसी तरह से मार्केट में तेजी आने से पहले ये आपको बता सकता है कि हाँ, अब यहाँ से मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, मार्केट विल फॉर्म अ bottom। So momentum indicators are very good tools for divergence। I will talk about that, वो भी मैं explain करूंगा, and then we'll look at examples। We'll take your questions as to how it can be done। So divergences ना, they are very important signals। मतलब if you look at divergence क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। I will explain what divergence is, how you can look at divergence। So divergences are very important signals because they will tell you कि हाँ, अभी प्राइस ऊपर जा रहा है बट इंडिकेटर इज नॉट गोइंग अप, दैट इज मोमेंटम इज स्लोइंग डाउन। इसका मतलब, इसका व्हाट इट मीन्स इज दैट देयर इज अ चांस दैट द प्राइस माइट करेक्ट और द ट्रेंड माइट चेंज। So divergences are very important signals you can easily identify through momentum indicators। I will take examples, I will explain that। तो मैं examples के साथ वो समझाऊंगा। और जनरली दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं। देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंसेस। वन इज कॉल्ड द बेरिश डाइवर्जेंस एंड द अदर इज कॉल्ड द बुलिश डाइवर्जेंस। So what we will do is we will look at both of them। So here you can see that there is something called the bearish divergence and there is something called the bullish divergence। So bearish divergence में what happens is कि I'll explain both in English and Hindi। So bearish divergence what happens is कि you can see that the price here is going higher। So this is one top and then again this is one top, so it is in an uptrend। But if you see the indicator below, so price is making higher highs but the indicator is making lower high, so indicator is not going, I am talking about the bearish part, the first part of this diagram। So you can see that the price is going up, but the indicator is making lower highs। So what it tells me? It tells me that the momentum is decreasing। That means now there is a possibility that there can be a turn in trend or a change in trend। And momentum indicators, they give you early warning as compared to price। तो इसको मैं जरा हिंदी में भी समझा देता हूँ कि बेरिश, जो देर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस, एक बेरिश डाइवर्जेंस होता है, एक बुलिश डाइवर्जेंस होता है। तो ये दोनों समझना बहुत जरूरी है बिकॉज ना ये आपको अर्ली वार्निंग दे देगा मार्केट के बारे में। आई विल शो विथ यू एन एग्जांपल आल्सो एंड विल टेक अप सर्टेन स्पेसिफिक स्टॉक्स ऑफ योर्स। आपके इंटरेस्ट के स्टॉक्स भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्राइस तो एक नया ना हायर हाई बना रहा है, प्राइस इज मेकिंग अ हायर हाई बट द इंडिकेटर इज मेकिंग अ लोअर हाई। मतलब इंडिकेटर जो है वो जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो लोअर हाइज बना रहा है। इफ यू सी वन टॉप हियर एंड देन लोअर, इट इज लोअर, द सेकंड टॉप इज लोअर देन द फर्स्ट टॉप।
तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि मोमेंटम जो है वो प्राइस का वो घट रहा है। तो अब वो प्राइस में वो स्ट्रेंथ नहीं रह रही है। तो दैट इज अ वार्निंग सिग्नल, आपको वार्निंग दे देगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है अंडरलाइन। जो आपको प्राइस, सिर्फ इफ यू सी द प्राइस यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बट यदि आप मोमेंटम इंडिकेटर के साथ देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कुछ हो रहा है, मतलब कुछ साइंस है। तो विल लुक एट एग्जांपल एंड वी विल डू दैट। द सेकंड इज बुलिश, I would say bullish divergence. So bullish divergence में what happens is कि price is making lower lows. So if you see in the bullish divergence, there is one low here, the first low, and the second low जो है that is lower than the first low. So it is making lower lows. But you see the indicator, जो bullish divergence indicator है, that is making a higher low. पहला जो low है and the second low in the indicator is higher than the first low. Excuse me. And if you see in the price, the second low of the price is lower than the first low. मतलब ये आसान है समझना कि आप ये समझिए कि प्राइस नया लो बना रहा है लेकिन इंडिकेटर नया लो नहीं बना रहा है, इंडिकेटर एक हायर लो बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। उसी तरह से प्राइस एक नया हाई बना रहा है बट इंडिकेटर नया हाई नहीं बना रहा है, इंडिकेटर एक लो बना रहा है। तो इसका मतलब है बेरिश डाइवर्जेंस। तो इट इज एंड इट इज वेरी यूजफुल एंड इट इज वेरी good to understand. So now what we will do, we'll look at charts, we'll look at stocks, and then we look at these momentum indicators. So there are various types of momentum indicators, many indicators. So we'll look at three of the most popular momentum indicators, and I will be explaining to them कैसे आप इसको use करते हैं, कैसे देख सकते हैं, किस भी time frame में study कर सकते हैं। So basically three indicators, momentum indicators I'll be talking about. First is MACD, then I'll be talking about the RSI, and third I'll be talking about the ADX. All these three are momentum indicators कि कैसे आप इसको देख के समझ सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है, मार्केट में स्ट्रेंथ कैसा है। So now what I would say is you all can in the chat you all can write the name of some scripts, कोई भी stock of your interest, and maybe first three or first five जो भी रहेंगे we will analyze them and then we'll look at Nifty and Bank Nifty also. ये सब इंडिकेटर्स को कैसे यूज करके कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे देख सकते हैं। सो यू ऑल कैन टाइप इन द चैट विच ऑल स्टॉक्स यू वांट मी टू लुक एट। तो हम लोग उस स्टॉक को एनालाइज कर लेंगे कि ये इंडिकेटर्स यूज करके, कि जैसे एमएसीडी हो गया, आरएसआई हो गया। सो वन इज आईसीआईसीआई, सो दिस इज या वी गॉट आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, बर्गर किंग। आई वुड से बर्गर किंग ना थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको एनालाइज करने का क्योंकि उसमें डेटा कम है, but we'll still try. Then Bank Nifty, yeah, we've got many stocks. I think we'll take the first one. So ICICI, if I can understand, then that is ICICI Bank. If I'm not wrong, so if that is it, so we'll look at. So I think you all can now see the screen. I'm just pull up the chart, so I will be looking at this. So we'll look at yeah. So it is ICICI Bank. Okay. So now what I'll do is I'll plot this indicator and we will see how it is working. So you will get a very good idea. So first we'll do an MACD, and इसमें MACD में you have to remember कि जो इसके पैरामीटर्स हैं ना, they are 12, 26 and 9. They are all exponential. आप उसको यूज कीजिए, that will give you good result. 12, 26 and 9 on the exponential side. So now you can see this is the beauty. I'll just show you अभी नाउ इफ यू आर सीइंग जस्ट आप अभी इफ यदि आप अभी देखेंगे ना स्क्रीन को, तो यहाँ व्हाट यू विल फाइंड इज दैट you are getting to see the price chart. Okay, तो you are getting to see the price chart and now there is no indicator below. तो आपको सिर्फ एक आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस चार्ट दिख रहा है। अब क्या है कि मैंने इस पे एक इंडिकेटर लगा दिया है, तो वो इंडिकेटर जो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दैट इज MACD. MACD is called MACD histogram. So now if you see it will be visible to you, that is MACD histogram. तो ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है एंड इट इज अ वेरी गुड मोमेंटम इंडिकेटर। तो अब आई विल टेल यू द राइट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द राइट साइड जो कॉर्नर में है कि अभी क्या होगा, मतलब आगे क्या हो सकता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इफ यू सी, अभी जो मैंने आपको बताया, व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू, कि व्हाट इट मीन्स इज कि प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज। सो वन टॉप इज हियर,
द नेक्स्ट टॉप इज हियर, बट जस्ट सी, इसका ये टॉप बना, बट इसके टॉप में इट इज ओनली दिस. सो देर इज क्लियरली अ लॉस ऑफ मोमेंटम in this particular stock ICICI Bank. So what is it telling me? That this high जो 527-28 का बन गया था ना on 14th December, so I need to be cautious on the buying side. It is clearly telling me because you see here this was one top here, एक top बना, this is again high. We can take this was somewhere around the same level. This again higher, so we are seeing higher high, so this is bullish momentum, not exactly bullish momentum but it tells me कि ये momentum is sustaining. but अभी क्या हो रहा है, ये इतना प्राइस ऊपर जाने के बावजूद भी ये जो MACD है, MACD हिस्टोग्राम आई एम यूजिंग बिकॉज दिस गिव्स अ बेटर पिक्चर. पीपल यूज MACD ऑल्सो, मैं हिस्टोग्राम यूज करता हूँ. 12, 26 और 9 इसके पैरामीटर से किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे एंजल ब्रोकिंग मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको ये सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं. एंजल ब्रोकिंग की जो trade.angelbroking जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं. बाकी भी यदि आप कुछ यूज करते हैं, चाहे ट्रेडिंग भी हो या इन्वेस्टिंग, वहां भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो यहाँ क्या है, इफ यू आर सीइंग दिस ना, इसको आप ये देखेंगे, आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. सी हियर, दिस वाज अ टॉप व्हिच आई एम सेइंग, दिस इज अ टॉप व्हिच इज मेड. सो हियर ये इंडिकेटर भी ऊपर है, यहाँ देखिए, बट प्राइस इज गोइंग अप, बट दिस MACD इज द टॉप इज वेरी लो कंपेयर टू दिस. तो प्राइस इज गोइंग अप but here it is coming down, so ये top, so it is a warning signal. So what is it telling me? You have to be cautious on the buying side in ICICI Bank because it is showing bearish divergence and this is also negative. तो ये जीरो लाइन है, जीरो के नीचे बार, से मतलब वो नेगेटिव है, मतलब इसमें इसका मतलब है कंपेरेटिवली बेयर्स आर स्ट्रॉन्गर. यदि लाइन जीरो लाइन के ऊपर ये बार्स है एंड दे बिकम बिगर एंड बिगर, दैट मीन्स दिस इज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. So that it tells me. So you can look at this is the way you can look at. So we'll take the next stock. ICICI के बाद जैसे Infosys है, someone has mentioned Infosys. So we'll look at Infosys. Just one second. Yeah. So look at Infosys. तो Infosys में क्या है कि we are seeing here, just look at this. Here, if you are looking at Infosys, what we are seeing here is that this is one top which is being made. So यदि आप इसको देखेंगे इधर, if you are looking at Infosys, a top is being made here, and then see this is positive, but see current it is higher than this, so that means there is still bullish momentum in Infosys. On the this I am looking at the daily chart, तो आप different time frames में देख सकते हैं. That is the beauty, that is the best part. और एक चीज इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड सीक्रेट विच यू कैन यूज, कि कभी भी ना ये मोमेंटम इंडिकेटर्स फर्स्ट टाइम यदि एक्सट्रीम रीडिंग दिखाता है ना, सो दैट इज अ साइन ऑफ अ, यदि पॉजिटिव है तो दैट इज अ साइन ऑफ अ बुल मार्केट. जैसे इन्फोसिस में इफ यू सी ना, तो इसको हम लोग बहुत पीछे भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टॉप है समवेयर अराउंड 900 लेवल्स पे ना, ये दिस मेड अ हाई कंपेयर टू ऑल प्रीवियस, ये जो हाईज हैं उसके ऊपर का ये हाई बना है. तो दैट इज अ, मतलब वो दैट इज वेरी स्ट्रांग, सो दैट टेल्स मी कि देयर कैन बी अ स्ट्रांग बुल मार्केट. सो यू कैन ऑलवेज वॉच आउट फॉर दिस. सो दिस इज द वे यू लुक एट मोमेंटम. सो दिस इज वन स्टॉक. बर्गर किंग यू आस्क्ड, तो लेट मी सी. तो इसमें क्या ज्यादा चार्ट नहीं है, डेटा यू कैन सी ना, डेटा इसमें ज्यादा नहीं है, हार्डली वी आर गेटिंग. तो इस पे टेक्निकल्स में यूज नहीं कर सकते जब तक वी डोंट गेट enough data. So we look at bank nifty. Yeah, bank nifty is here only, so we look at bank nifty. So if you look at bank nifty, what we are seeing here is that again, if you see, this was a high, see here, this was a very strong bullish momentum. ये बहुत strong bullish momentum bank nifty में हुआ, ये पॉजिटिव है. उसके बाद जस्ट सी दिस इज हायर, सो देन व्हाट वी आर सीइंग इज की हायर हाइज, सो प्राइस इज आल्सो, सो दिस इज गुड. बट सी हियर, यहाँ क्या हुआ, इफ यू लुक हियर, इफ यू लुक हियर, सो बैंक निफ्टी हैज मेड अ हाई, इट्स अ हायर देन दिस, बट दिस इज नेगेटिव. तो क्लियरली क्या बोल रहा है मुझे कि बैंक निफ्टी में अब आप कॉशियस हो जाओ. ये 31,000 का जो हाई बना है ना, मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, मतलब हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर
रहेगा बैंक निफ्टी, बिकॉज दिस इज वेरी नेगेटिव। तो ये कंसोलिडेट करेगा, रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, तो नीचे 29,000 एंड ऊपर 31,000, सो दैट्स अ रेंज वो बैंक निफ्टी में दिख रहा है। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। तो व्हाट आई वांट ना, मैं क्या चाहूंगा कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप भी इसको थोड़ा एनालाइज कीजिए। कोई स्टॉक लेते हैं, देखिए उसका मोमेंटम कैसे आपको, क्योंकि यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, ये तो बेरिश मोमेंट, बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। बिकॉज यहाँ बैंक निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है, बट ये तो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में भी नहीं है। तो यू नीड टू बी स्लाइटली डेफिनेटली कॉशियस हियर। नेक्स्ट वी लुक एट टाटा मोटर्स। So look at Tata Motors. Again, what we are seeing here is something of the similar nature as Bank Nifty. तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ इसने हाई बनाया, उसके बाद आप if you see here, so we'll just let the chart come up. So if you see this large green candle which is there, this large green candle, तो इसमें क्या है कि यहाँ ये हायर हाइज बना रहा है, उसके बाद फिर ये you see here, it made a high but this is momentum is declining. So what is it telling me? उसके बाद just see what happened in Tata Motors. From almost 190 it came to 155. तो it is clearly telling me कि हाँ now momentum decline हो रहा है, तो I need to be cautious on the buying side. So MACD is a very good indicator for momentum strength. आपको पता चलेगा कि वो कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, कौन सा स्टॉक वीक है। आप डेली चार्ट्स पे यू कैन अप्लाई, ऑन वीकली चार्ट्स यू कैन अप्लाई, so it will give you a very good perspective. And we look at the last stock for this, Eicher Motors. कि Eicher Motors, what it is doing. Eicher Motors again, इसको आप देखेंगे ना, तो more or less Eicher Motors is also having a similar type of movement here. So what we are seeing here is कि ये एक higher high बनाया, this is also, but now we are seeing a decline in momentum. Just see what has happened. From 2700 it corrected all the way to 2300. But you should always look at different time frames. Now just see here, ये थ्रू आउट में क्या ये नेगेटिव है, जीरो के नीचे है, तो कहीं गया क्या? आयशर मोटर्स कहीं नहीं गया, वो साइडवेज ही ट्रेड कर रहा था। तो इट कैन टेल यू, नाउ जस्ट सी, यहाँ ये पॉजिटिव हुआ और फिर ये देखिए इसके ऊपर इधर हुआ, तो इट नाउ टेल्स यू। तो इफ यू आर एबल टू स्पॉट मोमेंटम ना, तो आप फास्ट एंटर कर सकते हैं एंड यू कैन एग्जिट फास्ट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आइडेंटिफाइंग मोमेंटम। और मोमेंटम में जो डाइवर्जेंस होता है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ ये तो फिर भी ठीक है कि प्राइस ऊपर गया एंड इट्स मेकिंग अ हाई, बट दिस इज क्लियरली टेलिंग मी कि ये नेगेटिव है, मतलब यू हैव टू बी कॉशियस ऑन द बाइंग साइड इन आइशर मोटर्स। So we'll take one last talk and then we'll move to the other indicators. Yeah. Now look at persistent. This is persistent. See on the daily chart, it is extremely strong. And see, this is the beauty. If you see here, एक मिनट आने दीजिए, let it come, अब मैं बताता हूँ। So persistent, if you see ना, तो somewhere in May it, ये जो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ पहले, एक में ऐसे करके, हाँ। इफ यू सी दिस ना, ये टॉप जो है, ये इंडिकेटर का, वो उसको मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, तो ये टॉप जो है वो इधर आया था। कब आया था? 2019 फरवरी में, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल। ये कब की बात है? मई 2020, मतलब रफली 1.5 years के बाद ऐसा टॉप आया। मतलब इट इज गिविंग अ साइन एट 500 ओनली कि a bull move can happen in persistent technologies. And then the stock started rallying. Even today if you see, the daily momentum is very strong here. तो अभी भी क्या है, मतलब इसका ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही है और मोमेंटम भी स्ट्रांग है। ये यहाँ भी दिख रहा है कि मोमेंटम स्ट्रांग है। सो दैट इज द advantage of looking at momentum indicators. So I think now there are too many stocks. So why MACD is 26 and 9? So because there are so many stocks. Okay, let me see if I can do something about it. Okay, fast I'll go and we'll see if I can cover some other stocks. Bharti Airtel, I'll answer all your queries, don't worry. तो इसमें अब भारती एयरटेल में व्हाट इज इट क्लियरली टेलिंग मी, ये मुझे क्लियरली बता रहा है कि इसमें मोमेंटम नहीं है, मतलब ये ऊपर जाके सस्टेन नहीं करेगा। वी जस्ट पुल अप द चार्ट, लेट द चार्ट कम अप, देन यू विल बी एबल टू सी। सो दिस इज भारती एयरटेल। तो इसमें आई एम लुकिंग एट द डेली चार्ट, आई कैन ऑल्सो गो एंड लुक एट द वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे भी आप वो इंडिकेटर प्लॉट कर सकते हैं।
तो वीकली पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन डेली में इफ आई सी, so daily may clearly it is telling me that if I look at this daily chart of Bharti Airtel, just let it come. Yeah. So if you look at the daily chart of Bharti Airtel, we are seeing कि momentum जो है वो कम है। ये मतलब यहाँ strong था, just see here, यहाँ strong था तो अच्छी रैली हो गई, अब ये sideways चल रहा है, मतलब you see this, यहाँ प्राइस ये था लेकिन उसके बाद ये हाई बना, बट दिस हैज कम डाउन। तो क्लियरली टेलिंग मी कि डेली चार्ट्स पे इट इज लूजिंग मोमेंटम। So that's one. Then IndusInd Bank, there's a question. We'll look at IndusInd Bank, and then we look at other indicators. See, look at IndusInd Bank here. This let it come IndusInd Bank. So I will explain that. So yeah. So now we look at IndusInd Bank. So if you see here, na, this green line which is there, I'll just plot. Yeah. So and this green candle. So if you look at this green candle, this large one, move up, move. So it is here, this is a top for this indicator. But again, if you see here, so the next candle, I will just show you. So if you look at here, this candle, so in this you will find that yeah. So now if you see here, this candle, this is a high for in the scene. Earlier the high was 840, now it is 940. But look at this indicator here, MACD. It is so low. So what is it telling me? That overall the momentum has declined, the momentum has come off in this stock. That means now the rally seems to fizzle out. So the momentum, if you see, is coming out. It is overall coming down. And then you see what has happened. From 940, it corrected sharply, coming down to 800, 820 levels. So like this, na, I'll now what I'll do, we'll look at other stocks, but we'll take other indicators. So isko मैं अभी I'll just hide it, and we'll have, like, we'll look at ADX, and then we'll look at RSI as well. तो ADX में क्या है? This also is a very good momentum indicator. It can really work very well. इसको आप use करते हैं. So we will tell you, I'll tell you कि इसको कैसे use करते हैं, how to look at that. It's a very good indicator. I think this is one indicator. If you can learn how to use it, you can really do very well. So yes, yeah. So now you can see कि this is IndusInd. So we'll take the next stock, that is SBI Card. और उस पे हम लोग बात करेंगे SBI Card पे. तो ये जो इंडिकेटर है ना ADX, ADX में क्या है? ADX इज अगेन ना मोमेंटम इंडिकेटर, मतलब आपको ये बताएगा, ADX विल टेल यू, ADX विल टेल यू वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट और अ स्ट्रॉन्ग और अ साइडवेज मार्केट। तो अप ट्रेंड है तो यदि वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है क्या, वो आपको बता सकता है। सेकेंडली डाउन ट्रेंड है और बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है क्या, वो आपको बता सकता है। तो ये एक मेजर एडवांटेज, और आपको ये भी बता सकता है कि अभी कोई ट्रेंड नहीं है, अभी वो साइडवेज है। तो उस समय जब साइडवेज हो ना, तब आप स्टोकेस्टिक्स, आरएसआई, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कीजिए, दैट इज द बेस्ट। सो व्हेन द मार्केट इज साइडवेज ना, यू डोंट, दैट मींस देयर इज नो मोमेंटम इन द स्टॉक, so it is just moving around like this and it's going sideways and all that. So then it is best to trade in support and resistance levels. उस समय यदि if you use moving averages, so it will not work. Now just see the beauty. I will explain with this example. Just one second. So ADX is an indicator which I would recommend you all should definitely use. इसको नहीं use कर रहे हैं तो use करना सीखिए। यदि use कर रहे हैं, but how you are using, you will not know. So I will tell you here how to use it. तो ADX में क्या होता है, उसका जो बेसिक पैरामीटर 14 है, तो उसको 14 ही रहने दीजिए। तो ADX में there are basically three lines. If you see in this, there are three lines. So one you can see is a red line, one is a green line, and the other is a white line. तो जो व्हाइट लाइन है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द ADX लाइन। तो आप डिफॉल्ट एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो आपको यही मिलेगा, आप कहीं भी यूज करेंगे तो यही मिलेगा, डिफॉल्ट 14 ही रहता है। तो तीन लाइन रहते हैं, उसका कलर्स आप अलग अलग रह सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि ग्रीन लाइन है, मतलब ग्रीन, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आई विल एक्सप्लेन हियर। सो इफ यू सी हियर, या, so if you look at here somewhere where my cursor is right now,
So it is just if you look, this is SBI card. So now you can see that where my cursor is, na, there the green line is above the red line. So you see that now the movement up move has started for SBI card, and from 580 it has rallied, and see this green line is there, and if you see the green line is above the red line till here somewhere around, if you look here, this is the price is around 860 levels, price is around 860 levels, and this is till 21st September 2020. So this year, so from almost 16th of June and till 21st of September. So June, July, August. So 3 months the stock has been in an up move, and that is clearly signaled by this green line being above the red line. And you, so that is one. So if the green line is above the red line, it basically means that now the bulls are strong. There is bullish momentum in the stock. So you should be on the long side of the stock. That is one indication which it gives. But sometimes it will fail also. But here you need to remember is that you have to look at the other line also, the ADX line. So if the ADX line is below 20, like right now if you see, यदि आप अभी देखेंगे ना, तो अभी आप देखिए तो ADX का जो लाइन है वो 20 के नीचे है, मतलब अभी इसकी वैल्यू क्या है, 10 है. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि SBI कार्ड अभी कहीं नहीं जा रहा है, वो 860 780 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. और ADX का जो है वो काफी समय से, मतलब इफ यू सी रफली ऑलमोस्ट एक बार इसने ये हाई बनाया, उसके बाद सिंस अक्टूबर एंड से वो रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. तो ADX क्या है, ADX इज बिलो 20, रफली अराउंड 10. तो इट इज क्लियरली टेलिंग मी कि यदि मैं अभी मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, इचिमोकू, पैराबोलिक यूज करूंगा तो सब फ्लॉप होगा इस स्टॉक में राइट नाउ, क्योंकि ये स्टॉक ही साइडवेज है. तो साइडवेज में आप ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स यूज नहीं कर सकते. तो इसमें क्या है, इसमें आप ऑसिलेटर्स यूज कीजिए, RSI, स्टोकेस्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कीजिए, तो दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट. सो दिस इज अनदर वेरी गुड इंडिकेटर. एंड इसमें भी ADX में क्या है कि once it starts moving above 30, so that is a strong sign of a strong trend. तो यहाँ if you see ना, तो somewhere around here, if you look at this SBI card only, मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ये वाला समझा रहा हूँ आपको. तो SBI कार्ड में if you see ना, तो here somewhere around 9th of June ये ADX की जो वैल्यू है वो 30 के ऊपर गई, और green line is also above the red line. So that means this is a very good opportunity somewhere buying here. From 700 it rallied all the way to almost 900. So 30% up move roughly was there. So not 30%, roughly around 20-22% move in the next few. तो ADX में क्या है, ये भी आपको strong momentum identify कर देगा कि हाँ momentum बहुत strong है, तो you can look at it. So we'll look at the other stock which has been talked about. So that is Canara Bank. Hmm. So look at Canara Bank. See, this is the beauty of ADX. See here. Now just let it come. I think it's just coming on your screen. I'll just enlarge it for all of you. So if you look here, Canara Bank, yeah. So somewhere around this region. So from 12th of October, if you look at it, so from 12th of October, na, it was if you look, yeah. So from 12th of October, it was below 20. If you see, ADX value came to as low as 10. So it is completely trading sideways. But then you see here, that is if we move towards the November, so somewhere around 17th November, it crossed 20, and then it started moving up, and you can see that the green line is above the red line. And then you see somewhere around here, somewhere around 27th November, when it from almost 90 it went to 100, there the ADX became 30. And just see, from 100 it rallied to 145 in the next 5 6 7 days. So if you can use this indicator well and understand it well, यदि आप इसको अच्छे से यूज करना सीख लेते हैं ना, तो it can really help you.
तो क्या होगा साइडवेज मार्केट में, जैसे इफ यू सी अर्लियर आल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, आई जस्ट गो बैक. So somewhere around the 15th June or so. So if you look on the screen, you'll get to see that yeah. So 15th June, it was again going below 20. तो ADX की वैल्यू 20 थी, वहां से वो घट के वो फिर अगेन 9 आया, तो पूरा साइडवेज ट्रेड कर रहा है. तो जब साइड व्हेन इट इज ट्रेडिंग साइडवेज, so in that case you don't need to worry much. So you can see it is completely trading sideways. So this is one very good indicator. Yes, you have to understand that all the indicators they have their own sometimes they will fail. कभी कभी indicators काम करेंगे, कभी indicators काम नहीं करेंगे, but still you will be better off यदि आप ADX को और अच्छे तरीके से समझते हैं. So hope that clarifies ADX. So we'll look at Britannia. We'll again use ADX on that, and we'll see. So so just see, I have put up Britannia right now. So for all of you to see, let me just bring it up. So on this, if you see Britannia, what is the ADX telling me towards the end? That it is roughly around 20. It is flat, more or less. So it is not going anywhere. It is completely trading in a range. So that's the beauty of this indicator. So it will tell you कि हाँ अभी जो है momentum strong है. अभी अभी जैसे if you see earlier, we will just go back and see. So here you see earlier where this up move is happening. You are seeing that the ADX value is somewhere around 23, 24, and then it starts moving up, and then it goes to 30, around 3300, and from there it rallies by almost again 20%. तो इफ यू कैन स्टार्ट आइडेंटिफाइंग स्टॉक्स ना जिसमें एडीएक्स की वैल्यू 30, मतलब पहले तो 10 से नीचे से वो बढ़ के 20 और उसके ऊपर 25 30 पहुंच रही है, एंड इट इज गोइंग इन एन अप ट्रेंड, और प्लस डीआई उस समय माइनस डीआई के ऊपर रहे, दैट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक. So you can use that indicator. So hope that clarifies your question. Why MACD is 26 and 9 always? Basically, जो MACD indicator है ना, that was developed by Gerald Apple. तो उन्होंने he checked different parameters, different permutation combinations, and he found that 26 and basically 20. If you look at just one second, uh, so it is not it is 12, 26 and 9. So it is 12, 26 and 9. There are three this. So it is 12, 26 and 9. But these are the parameters which you should use because they give, because उस पे काफी टेस्टिंग हुई थी, उन्होंने काफी टेस्ट किया था, बाकी लोगों ने भी टेस्ट किया, and they found कि default parameter is the best. So 12, 26 और 9 all exponential you should use for MACD. उसी तरह ADX में 14 is used, most commonly used, so you can use 14. So there is one question on Reliance कि Reliance में क्या है. तो what we will do, we'll look at Reliance and see Reliance Industries. So just look at Reliance. अभी मैं इसका Reliance का चार्ट प्लॉट करता हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग देखिए Reliance का, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अभी Reliance कैसा करेगा या क्या करेगा. तो आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. तो जितना आप खुद सीखते हैं ना उतना आपके लिए अच्छा है. द मोर यू लर्न द बेटर यू बिकम. सी व्हाट इज द Reliance ADX टेलिंग मी that it is somewhere around 12 15 right now. So what is Reliance doing for the last 15-20 days? Sideways, not going anywhere. So you should wait for it to break out, and then if it is moving in an uptrend momentum like here, if you go back and see Reliance again here, so this also was there, it came down and then it started rallying. So you look at the ADX, so it tells you it gives you a very good picture. So there's another stock uptrend. Yeah, please take Wipro. So we'll look at Wipro. Look at Wipro. So Wipro, what is it telling me? From, if we go back, Wipro, and we will look at Wipro's chart and see how it is working. And I will tell you one more secret, which is again very useful. You can use it. That also is very helpful. So in Wipro, na, if you see, so in May, it was ADX value was around 12, 13. Then it started moving up, and then it crossed 20 in June first week,
and then it went to 30 in 8th or 9th June when the price was somewhere around 230. And the green line, if you see the green line, so I will just एक्सप्लेन दैट वंस अगेन. मैं इसको थोड़ा धीरे से एक्सप्लेन आराम से करता हूँ कि ये जो विप्रो का जो चार्ट है ना, इसमें आप देखेंगे कि समवेयर अराउंड 8th of जून के आसपास ना एडीएक्स का वैल्यू बिकेम 30 और वो कंसोलिडेट कर रहा था. तो मींस वो और काफी दिन कंसोलिडेट किया एंड वन डे ओनली इट जंप्ड. तो ये कंसोलिडेशन वाज आल्सो अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो हियर दिस वाज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड फ्रॉम देयर 230 इफ यू सी, तो वो जो रेड कैंडल जो है ना, मतलब सॉरी रेड जो ग्रीन लाइन है, वो रेड लाइन उसको ओवरकम अभी तक नहीं किया. मतलब एक दिन इधर शायद किया था समवेयर अराउंड 330 340 के लेवल्स पे अराउंड 2nd of November. और यहाँ यू आर गेटिंग एंट्री एट अराउंड 220. सो 220 से 330 यू कुड हैव बीन इन दिस स्टॉक by just using this indicator. So this is a very good indicator. You should definitely analyze it. इसको थोड़ा और study कीजिए तो you will learn it. It's very helpful. इसके और भी काफी parameters और भी understanding है, वो भी आप उसको समझिए. So मतलब I'll give you one more insight in this कि जैसे ना ये green line is above the red line, उसी तरह से यदि red line is above the green line, तो that tells me कि it is bearish. That means I have to be cautious. And here also it is going from below. And just see from here again it corrected all the way from 230, it corrected to 160. तो ADX से ना आपको बुल ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड दोनों पता चलेगा. मतलब यदि रेड लाइन इज अबव द ग्रीन लाइन और ADX ऊपर की तरफ जा रहा है, ADX हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, 30 के ऊपर जा रहा है, तो आपको ये देखना है कि ग्रीन लाइन ऊपर है कि रेड लाइन ऊपर है. तो रेड लाइन ऊपर है मतलब डाउन ट्रेंड है, ग्रीन लाइन ऊपर है इसका मतलब है अप ट्रेंड है, बिकॉज दैट इज प्लस DI एंड माइनस DI और उसका डिफॉल्ट पैरामीटर इज 14. सो होप दैट क्लैरिफाइज योर क्वेरी. Yeah, so there are so many questions. Yeah, MACD correct, that's right. Yeah, we'll look at Adani Power. Okay, so we have some questions. I'll take those questions. ICICI Bank, there was a question कि ICICI बैंक जो है उसका वीकली हम लोग यदि देखें तो कैसा है, हाउस दैट. तो ICICI का वीकली आप देखो तो आई एम जस्ट पुटिंग अप दी बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज कम, सो आई विल टेक द क्वेश्चंस, डोंट वरी. एंड क्वेश्चंस में ही ना मैं RSI भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जो एक और इंडिकेटर अभी हम लोग, जैसे मैंने ADX आपको एक्सप्लेन किया, MACD एक्सप्लेन किया, वैसे अब ये ICICI बैंक है. तो अभी क्या है, ICICI बैंक का वीकली MACD तो बहुत स्ट्रांग है, तो व्हाट इट टेल्स मी कि हाँ इट इज कंटिन्यूसली इट इज स्ट्रांग. डेली में देखूँ तो डेली मुझे बोल रहा है कि नहीं वो ऐसे फ्लैट चल रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अभी मोर और लेस इट विल ट्रेड इन अ रेंज. और ADX का वैल्यू क्या है, ADX में एक चीज और है कि इफ यू आर लुकिंग एट ADX ना, ADX का स्लोपिंग अपवर्ड्स होता है और स्लोपिंग डाउनवर्ड्स. तो यदि डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है ना, इसका मतलब है कि देर इज सम स्लाइट चेंज ऑफ ट्रेंड. तो अभी मोर और लेस इट इज क्लियरली टेलिंग मी, इफ आई लुक एट दिस ऑन अ वीकली चार्ट ICICI बैंक, तो मुझे बोल रहा है कि ICICI बैंक का वीकली मतलब मीडियम टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, और डेली ट्रेंड जो है मोर और लेस फ्लैट है. तो इट इज समवट टेलिंग मी दैट ऑन द ICICI बैंक. Then we have some, so there's a question on ITC. So we'll look at ITC and see how ITC is doing. So look at ITC. So ITC here, if you see, this was this date on 3rd of November. If you look at ITC on 3rd of November, so here we are getting this plus DI is above minus DI. So this green line is above the red line, and ADX is also now somewhere around 22, and then ADX goes to somewhere around 30, around 190 levels, and from there again, so this also somewhere could have been a buying opportunity. And then you see it has significantly rallied from 190, 185, 90, it went to 215, now it is coming. One important point which I want to tell all of you is that yeah, one important point which I want to tell all of you is that when the ADX reaches extreme value, so when the ADX reaches extreme value na, you have to be cautious. Means extreme value means what?
If the value reaches 50 and above, that means that is a sign of a overheated market, either on the upside or the downside. So any ADX value above 50 on between 60, so you need to be slightly cautious. So ITC में भी आप देखेंगे ना, तो ITC में आपको वो दिख जाएगा कि EDX का जो वैल्यू है वो समवेयर 50 तक जाके फिर वहां से वो करेक्ट किया. So that's something which you should look at. Then we have questions on other stocks. I think there are too many of them. How to manage so many? But I'll see. I'll make it quick then. So Adani Power is there. Adani Power. So look at Adani Power. Again, very good. Here, if I'm looking at Adani Power, so what I'm seeing here is that Adani Power, in that sense, if you look at this chart, which I am plotting for you, Adani Power. So in this case, what you will see in Adani Power is that this stock has rallied significantly. So, so once we look at this stock, so you will get a fairly good idea as to how Adani Power has moved, how it has traded. So that's something which you can look at. So Adani Power, I would say, has witnessed a up move. It has from 34, it has gone to 64 levels. So more or less, it has doubled. So if you see again the ADX was, I would say, sideways. ADX was below 20 for quite some time, and then all of a sudden ADX started moving up, went to 30, when it was around on 25th of November. If you look at this, na Adani Power, I'm talking about. So Adani Power on the 25th of November, मतलब 25 नवंबर 26 नवंबर के आसपास ना, ये ADX जो है वो 30 के आसपास पहुंचा और स्लाइटली ऊपर बढ़ रहा था. और ग्रीन लाइन जो है प्लस DI इज अबव माइनस DI, मतलब जो ग्रीन लाइन है तो वो ऊपर था. तो कहीं ना कहीं व्हाट इट इज टेलिंग मी कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है. तो देयर यू कैन सी कि इट हैज फ्रॉम देयर इट हैज रैलीड. सो फ्रॉम ऑलमोस्ट 38, तो आप इतने दिन होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है. तो इफ यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट दिस ADX इंडिकेटर ऑल्सो ना, आपको मोमेंटम का आइडिया लग जाएगा कि जब ADX 20 के नीचे से या 10 के नीचे से ऊपर बढ़ रहा है और 30 के ऊपर जा रहा है, सो इट इज क्लियरली टेलिंग मी हाँ क्या इसमें कुछ हो सकता है. और प्लस DI है, अबव माइनस DI है, मतलब ग्रीन लाइन इज अबव द रेड लाइन. सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. सो होप दैट clarifies on Adani Power. I think there are too many questions. Will not be able to. Time frame. Ajit, time frame na, you can look at any time frame. That is the best part of technical indicators. कि टेक्निकल इंडिकेटर्स को ना आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं. इट इज नथिंग कि आप उसको बस डेली पे यूज कर सकते हैं या वीकली पे. इंट्राडे पे भी तो हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे हम लोग ये इंडिकेटर्स को देख लेंगे यूज करके कि कैसा इसको इसके इंटरप्रिटेशन कैसा आता है. तो विल डू दैट. Which software is this? No, this is Falcon 7, a software, technical charting software which I'm using. So hope that I helps you. What time frame use in ADX? Again, ADX you can use parameter is 14. 14 लेकिन आप इसको you can use it in different time frames. You can use it on a 5 minute, on a यदि इंडेक्स ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट 15 मिनट पे आवरली पे भी यूज कर सकते. बट अदरवाइज यू कैन यूज देम ऑन डेली वीकली चार्ट्स एज वेल. So, does MACD histogram work on extremely low 1 minute, 5 minute also? I will show you why to get. Now we look at these questions and see how that is helping. So now we will look at that. We will now go to intraday. So there is one more indicator which I want to talk about. We'll see time permitting. We'll talk about that. That's RSI. Basically, that again is a मोमेंटम इंडिकेटर, ऑसिलेटर है. ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के लिए बहुत अच्छा यूज होता है. साइडवेज ट्रेडिंग के लिए इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर. यू कैन डेफिनेटली लुक एट. तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम परमिटिंग विल लुक एट इंट्राडे एंड वी विल लुक एट द सेम इंडिकेटर्स जो हम लोगों ने इस पे बात किया है, इस पे वी टॉक्ड अबाउट. सो वी लुक एट, सिंस वी आर लुकिंग एट निफ्टी, तो वी कैन ऑल्सो लुक एट अ 5 minute chart. Now see the beauty of this.
दिस इज येस्टरडे। नाउ वी लुक एट निफ्टी। मैं निफ्टी प्लॉट करता हूँ और इसको हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी देखेंगे कि निफ्टी 5 मिनट के चार्ट पे कैसा दिख रहा है, बिकॉज निफ्टी इंडेक्स यू कैन ऑल्सो ट्रेड ऑन अ 5 मिनट चार्ट। सो वी विल लुक एट अ निफ्टी 5 मिनट चार्ट। तो इस पे मैंने क्या किया है, वो इंडिकेटर्स प्लॉट कर दिए हैं जो हम लोग बात कर रहे थे, एमएसीडी, एंड वी आर लुकिंग एट एडीएक्स। So now what you see is that if you look at Nifty, this is a again a 5 minute chart. Nifty तो यहाँ क्या हो रहा है कि if we look at this on a 5 minute chart, so we are clearly what we are seeing is that yeah. So now you see that a 5 minute chart, आज का ही देखते हैं। आज का ही आप देखो तो ADX का वैल्यू क्या है आज? करीब 10:30 बजे एडीएक्स का वैल्यू था 50 के अबव, 56। तो व्हाट इज इट टेलिंग मी कि ओवर हीटेड है। तो यदि like if you look at this at I will just put it for the benefit of everyone, I'll put a cursor there and you can see for yourself. So somewhere around 10:20 today and somewhere around 10:30 today. So if you look at between 10:20 and 10:30 today, this ADX value was above 50. So it was between 50 and 60. So it was clearly telling me that you need to be cautious on the buying side in Nifty. So it is an overheated market. So if you are long, you could have booked profit. This was also an opportunity to go short if one wanted to. But here you can see that the plus DI is still, that is the green line is still above the red line. So that is there. But this is, since it is overheated, so you can take this chance. That's the advantage of using ADX. It can give you some turning points. Like look at here, I will just go back and I will show you. Again, if we go back and see for the last couple of days, so this is again Monday. So if you look at Monday, what we are seeing on Monday is that we are more or less getting to see on towards the end of closing around 2:30 or so that the ADX value is again somewhere around 60 and 65 on a 5 minute chart of the index, that is Nifty. So clearly it is telling me that you need to be on the buying side. You need to be on the, at least if you are short, then you should cover your short position. So that is the advantage. If you look at it, that is the advantage. So here you can see for yourself that here the ADX value is somewhere around 66, 65, 66. And after this major correction, it is there. So it is telling me that don't go short now. If you're short, cover your short, and then maybe you can look at a buying opportunity. Now just see, this is more or less again a bullish divergence on the MACD. So because it is, the lows are almost the same, but here the MACD is positive on this other day after the major fall the other day. So clearly it is telling me, that you can get you are getting an opportunity here. So this is the way you analyze indicators. This is the way you look at different time frames. Now we are using the same indicator, different time frame, 5 minute time frame. So that is the advantage of I would say using these indicators. So apart from that, if you look at other indicators in terms of the RSI, so in that case, what happens is that RSI is more or less an indicator which you can use it to your advantage. So that's there. Then that you can use that for your advantage. That is quite useful. And also you can use the other indicators are there, so you can use them as well. There's a question in terms of the leading indicators. So leading indicators are the momentum indicators. You can use them as leading indicators. They can help you. Then I would say volatility as an indicator also, it's quite good. That also is something which you can definitely look at that as a leading indicator. So and like moving averages and all that, they are lagging indicators because they are
using the past data, but sometimes you get very good. So it's the divergences, if you can learn to use, यदि आप divergences को ढंग से use करना सीखते हैं तो वो आपको काफी help कर सकता है. Then yeah, for selling for selling there is another set of I would say parameters for MACD. That is something which you can, I think it is 13 and 39 and 13 and 39 for MACD. But I basically for buying and selling दोनों के लिए मैं 12, 26 और 9 use करता हूँ, and I'm getting very I get good results there. And if you look at this is again Bank Nifty. So if I've just plotted the Bank Nifty for you. So किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना तो वो आपको 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 उसका बेनिफिट मिल जाएगा. तो ये हम लोग बैंक निफ्टी देख रहे हैं. तो बैंक निफ्टी में अगेन यू सी, आई विल जस्ट शो हियर, इफ यू सी दिस वैल्यू हियर ऑन द ADX, दैट इज एक्सट्रीम, दैट इज क्लोज टू 70. तो क्लियरली वो आपको एक अलर्ट हो गया कि अरे इट इज रीचिंग 65 70 ऊपर चल रहा है, मतलब मुझे शॉर्ट नहीं करना है. Next day what happened? It came lower, slightly lower, and then from there it bounced back. So this again, if you are waiting, तो ये green जैसे हुआ plus DI, जैसे green line minus DI के ऊपर गया, तो this could have been a buying opportunity somewhere here. And just see yesterday, कल क्या हुआ बैंक निफ्टी में? कल क्या ADX का वैल्यू आप देखिए तो थ्रू आउट जो है वो साइडवेज ही मार्केट रहा ADX का. कल बैंक निफ्टी में मोर और लेस साइडवेज ही मूवमेंट कर रही. आज उसने अप गैप कर दिया एंड देन देयर वाज दिस अप मूव. बट कल तो पूरा साइडवेज रहा, मतलब जो ऑप्शन बाइंग करके चल रहा है कल उसको पैसा बनाने का चांस बहुत कम था, मतलब बहुत मुश्किल रहा रहेगा क्योंकि वो साइडवेज चल रहा है. मोमेंटम, जहां आप मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हो और आपको पकड़ में आ रहा है ना, वहां पैसा बनाना कंपैरेटिवली इजी रहता है. एंड इफ यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस देन इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट कि मोमेंटम, इफ यू आर एबल टू कैच मोमेंटम, यू मेक मनी ऑन द बाइंग साइड इन ऑप्शंस. जहां वो साइडवेज चला गया तो ऑप्शन प्रीमियम आपका जो है वो चला गया. तो होप दैट clarifies your question. I think there's one last question. We'll take that and then we will conclude for the for this. Sir, which indicator best? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे ये indicators हैं, you can use them. Apart from that, थोड़ा Japanese candlesticks को if you can study, that is quite useful. और support resistance जरूर देखिए. Support resistance से आपको पता चल जाएगा कि so that you are not shorting at a support level or you're not going long at a resistance level. So that is something which you should definitely look at. So that will be quite useful. uh, uh, so I think ye indicators, they are quite useful. You can use them well for your understanding, for your trading. काफी आपको इससे help मिलेगा. So I think I've taken all your questions. So yes, Sumit, you've written something. uh, I'll look into that. Yeah. It can be used for, yes, commodities का भी एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो we'll just look at say for example crude oil. तो ये क्रूड ऑयल, ये सॉरी ये सिल्वर है, तो मैं सिल्वर का एक एग्जांपल ले लेता हूँ. तो सिल्वर में भी ना, इफ यू सी, तो सिल्वर में वी विल लुक एट दिस डे. So like this is silver daily chart I am looking. Okay. So this is what 9th of July. तो 9th ऑफ जुलाई में क्या था, ADX की जो वैल्यू थी वो 20 थी, मतलब उससे पहले कम. उसके बाद ADX की वैल्यू बढ़ने लगी. ADX की वैल्यू जो है वो 17 जुलाई को जाके 30 हुई, जब ये 53,000 था. और 53,000 से जो रैली शुरू हुई वो जाके 78,000 पे रुका. और आप देखेंगे कि 78,000 के आसपास ही ना ADX का जो अपर वैल्यू भी है वो 50 के आसपास पहुंचने लगा था. मतलब वो एक वार्निंग सिग्नल जो है वो पहले से ही देने लगा था, क्योंकि वो यहाँ एक बार आया था 66,000 के आसपास 50, फिर वो मोर और लेस वहां एक बार और पहुंचा 50 टू 53. तो जब 50 के ऊपर जाए तो यू हैव टू बी कॉशियस. और जब नीचे से वो 30 के ऊपर जा रहा है ना, तो यू कैन बी रीजनेबली श्योर कि अब इसमें शायद कोई अच्छा मेजर अपमूव शुरू हो सकता है. यदि प्लस DI इज अबव माइनस DI, दैट इज ग्रीन लाइन इज अबव रेड लाइन. उसी तरह से यदि मेजर करेक्शन होगा तो उस समय रेड लाइन विल बी अबव द ग्रीन लाइन. सो यस, इट कैन बी यूज्ड फॉर कमोडिटीज. सर, विच चार्टिंग प्लेटफॉर्म आर यूजिंग? ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये Falcon 7 है. दिस इज Falcon 7, a desktop application, but you can use all these indicators. Everything is available on the Angel Broking charting application पे भी available है, और trading view इस सब पे तो available है ही. And they are popular indicators. आप जरूर इसको देखिए, यूज कीजिए. देखिए पैसा आपका है,
तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सीरियस होना होगा यदि आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो ये सब टूल्स आप यूज कीजिए तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, देयर इज नो डाउट इट विल नॉट हेल्प यू। हाँ, समटाइम्स यू विल नॉट, समटाइम्स दे विल गो रॉन्ग, दे विल गिव सम फॉल्स सिग्नल्स, वो तो रहेगा, बट यू हैव टू मैनेज इट। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सही कीजिए, मनी मैनेजमेंट को थोड़ा सही कीजिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही ट्रेड में आप पूरा पैसा लगा दीजिए। तो पैसे को ना हमेशा मतलब यदि आप ट्रेड करते हैं तो 2-3% से ज्यादा का रिस्क मत लीजिए किसी एक ट्रेड में। यदि आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो 5 से 10% से ज्यादा का रिस्क आप किसी एक, मतलब पैसा एक स्टॉक में मत लगाइए, मतलब 12-15 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाइए लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 2-3%, मतलब यदि आपके पास 1 लाख रुपए है तो 2-3-4 हजार, 2-3 हजार से ज्यादा का रिस्क मत लीजिए, मतलब स्टॉप लॉस वाला जो रिस्क है वो मत लीजिए। सो उससे क्या होगा कि यू विल बी इन दिस मार्केट फॉर लॉन्ग, आप अपनी गलतियों से सीख भी पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा बनाना होगा तो आपको एक मेजर मूव को पकड़ना भी होगा। जैसे होता है ना, बैट्समैन जो है एक एक रन लेता है लेकिन एक बॉल जो है बाउंड्री के बाहर कर देता है तो एवरेज बढ़ जाता है। तो वैसे ही कुछ ट्रेड्स में आपको ज्यादा पैसा बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो होप दैट look hope that clarifies your question. यस, करेंसी कमोडिटी दोनों में आप सारे इंडिकेटर देखिए, ये सब जो इंडिकेटर्स है ना, इसको यू कैन यूज इन कमोडिटी, यू कैन यूज इन करेंसी, यू कैन यूज इन इक्विटी, यू कैन यूज इन यूएस मार्केट, जापानीज मार्केट, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हैं। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ही जो इलिक्विड स्टॉक है ना, जिस स्टॉक में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसमें टेक्निकल एनालिसिस उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता। तो ये क्या है, जो मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स हैं उसमें आप यूज कीजिए। इंडेक्स में अच्छा काम करता है, कमोडिटीज में अच्छा काम करता है, करेंसीज में अच्छा काम करता है। सो एडीएक्स सेटिंग्स में एडीएक्स का डिफॉल्ट सेटिंग 14 है, उसको आप वैसे ही रहने दीजिए। तो या टू देयर इज वन कि आई एम अ ले पर्सन, तो ठीक है, ले पर्सन है, सब ने शुरुआत जब शुरू की थी तो सब हम लोग जितने भी थे, जितने भी लोग हैं, सब ले पर्सन ही है। वो धीरे धीरे सीखना पड़ता है। जल्दबाजी में मत रहिए, बिकॉज जल्दबाजी में आप रहेंगे तो क्या, आप ज्यादा अननेसेसरी रिस्क लेंगे मार्केट में जिसकी जरूरत नहीं है। तो आप धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे ट्रेड कीजिए। और प्लस और भी हमारे अच्छे कुछ ऐसे वेबिनार्स और ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है एंजल ब्रोकिंग के, तो वो सब भी आप देखिए। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, आई होप। ये मैंने कहा नीलेश, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फैल्कन 7 है, चार्टिंग डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, चार्टिंग एप्लीकेशन, जिससे मैं एक्सप्लेन कर रहा था। So with this, I will just conclude my session, and I will definitely, if you have any feedback, you can definitely share. And thank you everyone. Hope you all had some good learning. तो मैं जितना टाइम था क्योंकि बहुत ज़्यादा भी टाइम स्पेंड करूँ तो वो बहुत इन्फॉर्मेशन भी एक साथ देना सही नहीं है। ऑलमोस्ट वी स्पेंट एन आवर ऑन दिस, बट आई होप यू ऑल डिड हैव सम गुड लर्निंग। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैन्युअली प्लॉट करने के लिए लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ना प्लॉट करना मैन्युअली, मैन्युअली मैं तो बोलता हूँ बेस्ट है। आप पिवट लेवल से भी प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट विजुअली आप देख लीजिए। जैसे अभी क्या हम लोग यहाँ सिल्वर को देख रहे हैं, तो सिल्वर में मुझे क्या दिख रहा है कि एक मैंने अभी एक कर्सर मैंने यूज किया है, और समवेयर यदि आप देखेंगे ना तो ये कर्सर पे समवेयर अराउंड 57,500 58,000 पे सिल्वर का मेजर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस में देखूं तो ये एक 69,700 के आसपास का ऊपर में सिल्वर में, यदि मैं देखूं, अभी मैंने एक ऊपर में एक किया है, तो ये 69,700 का रेजिस्टेंस है। तो मुझे पता चल गया कि ये एक सिल्वर का फिलहाल रेंज है। तो उसी तरह से कोई भी स्टॉक है उसको आप एक बार विजुअली चार्ट पे देख लीजिए, आपको जहां जहां वो बार बार जाके घूम रहा है आइदर अप और डाउन, तो वो एक रेंज हो गया स्टॉक के लिए, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आई थिंक विद दिस आई विल कंक्लूड दिस सेशन। होप यू ऑल हैड सम गुड लर्निंग, आप लोग कुछ अच्छा सीख पाए, और मैंने कोशिश की है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको कर पाऊँ। तो थैंक यू वंस अगेन, एंड विद दैट वील एंड दिस सेशन। थैंक यू, and wish you all the best in your trading and investing.